In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Dear students, Assalamu alaikum. It's me, your English teacher, Faisal Shabbir. Dear students, today is a very beautiful day because today we are going to learn something new. Dear students, today we will discuss the parts of speech. Parts of speech is the main and basic and important topic of English grammar. If we understand the part of speech, then definitely we would be able to go to the step number 2, and definitely we would be able to learn and understand English in a better way. So actually it provides us a base to learn English in a good way. So parts of the speech. So first of all, I would like to let you know about the speech. What is a speech? Speech is basically the communication, the way of communication. How can we communicate our emotions, our ideas to the others? So speech is the communication, and the topic of our today's is the parts of the speech. Basically, I think that many of the students have already familiar of this lesson, of this lecture, which is the parts of the speech. It is an easy topic, and I hope that you can understand it well. So dear students, basically there are 8 parts of speech, and in this lecture we will discuss all the parts of the speech. We will discuss their examples, and also we use the part of speech in different sentences so that we can develop a better understanding. So the first part of speech is a noun. Well, first of all, I would like to let you know about the definition of the noun, then I will give you the examples, and then we will finally use these examples in the sentences. Noun is the name of the person, place or a thing or idea. तो प्यारे बच्चों, जो नाउन है वो किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, चाहे वो चीज़ कहीं पे भी हो. अगर वो कोई चीज़ है और उसका कोई नाम है तो डेफिनेटली हम इंग्लिश ग्रामर में उसको नाउन कहेंगे. Whatever the thing is, either it's a terrestrial, either it's aquatic, or either it's living on mountains, whatever the thing is, चाहे वो ज़मीन पे है, आसमान पे है, पानी में है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता. इधर लिविंग है या नॉन लिविंग है, इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता. अगर कोई चीज़ है और उसका नाम है तो हम इंग्लिश ग्रामर में उसको नाउन कहते हैं. चाहे वो लिविंग है, नॉन लिविंग है, वो जहाँ पे भी है, जिधर भी है, अगर उस चीज़ का नाम है तो हम उसको नाउन कहेंगे. तो सिंपल, आप जब भी नाउन को आपके माइंड में एक वर्ड आए कि व्हाट इज़ अ नाउन, नाउन क्या होता है, तो नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग. अब एनीथिंग में हर चीज़ आ जाती है कि वो किस तरीके से आपने उसको एक्सप्लेन करना होता है. तो बेटा ये डेफिनेशन थी नाउन की. अब मैं कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो आपके सामने दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए. तो मैं कोशिश करूंगा कि अपनी सराउंडिंग्स या अपनी विसिनिटी से आपको कुछ एग्जांपल्स दे सकूँ. फॉर एग्जांपल, आई एम सिटिंग इन अ रूम, so I can give you the example of a sofa, of a chair, of a fan, of a bulb, of a laptop, mobile, and free, each and everything. These are the names of the nouns. और इसमें basically different categorization होती है which we will discuss in the next lecture, but right now it is mandatory to let you know about the nouns only. तो अगर मैं cities के name लूँगा, for example London, America, जो है हमारा, आप कह लेंगे America is the name of the country. पाकिस्तान, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची. अब मैं अगर डिफरेंट नाउन्स के नेम अगर लेना चाहूँगा, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, हिस्टोरिकल प्लेसेस के लिए बादशाही मॉस्क हम कह सकते हैं, मीनार पाकिस्तान कह सकते हैं, ठीक है. तो इकबाल पार्क डेफिनेटली. तो बेसिकली बेटा मैं चीज़ों के नाम ले रहा हूँ, चाहे वो कंट्रीज़ के नाम आ रहे हैं, चाहे वो सिटी के नाम आ रहे हैं, और चाहे वो कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो आप ये कह लें कि किसी भी जगह का नाम है, कोई लिविंग नॉन लिविंग, फॉर एग्जांपल अ बॉय, अ गर्ल, ठीक है, हॉर्स, कैमल, किचन, ऑल टाइप ऑफ दीज आर द एग्जांपल ऑफ द नाउन. सो आई होप कि इतनी जो बल्क ऑफ एग्जांपल्स हैं वो आपके लिए काफ़ी होंगी. तो राइट नाउ अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इन एग्जांपल्स को कोशिश करते हैं, यूज़ करते हैं
in sentences. Important places, historical places के लिए बादशाही मॉस्क हम कह सकते हैं, मीनार पाकिस्तान कह सकते हैं, ठीक है, तो इकबाल पार्क डेफिनेटली। तो बेसिकली बेटा मैं चीज़ों के नाम ले रहा हूँ, चाहे वो कंट्रीज़ के नाम आ रहे हैं, चाहे वो सिटी के नाम आ रहे हैं, और चाहे वो कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो आप ये कह लें कि किसी भी जगह का नाम है, कोई लिविंग नॉन लिविंग, फॉर एग्जांपल अ बॉय अ गर्ल, ठीक है, हॉर्स, कैमल, किचन, ऑल टाइप ऑफ दीज आर द एग्जांपल ऑफ द नाउन। So I hope कि इतनी जो bulk of examples Hey हैं वो आपके लिए काफ़ी होंगी। Subscribe to my तो channel right now and also press हम this bell icon. सॉल्व करते हैं, इन एग्जांपल्स को कोशिश करते हैं, यूज़ करते हैं इन सेंटेंसेस। ये हमें पता चल गया कि नाउन क्या है, लेकिन अब इनको हमने यूज़ कैसे करना है, या सेंटेंसेस में हमारे सामने अगर कोई सेंटेंस आ जाता है तो उन सेंटेंस में हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि नाउन क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पे भी अभी शो हो जाएगा कि जो एग्जांपल्स मैं कोशिश करूँगा कि वो कन्वे हो जाए आपके थ्रू स्क्रीन एज वेल। The teacher told the children to stop chattering in the class. This is the sentence. The teacher told the children to stop chattering in the class. तो इस सेंटेंस में बेटा एक नहीं, दो नहीं, तीन नाउन्स जो हैं वो इसमें है। फॉर एग्जांपल सबसे पहला नाउन तो टीचर हो गया, फिर जिसको वो कह रहा है, पॉइंट कर रहा है, वो चिल्ड्रन हो गया, और जो थर्ड नाउन है वो क्लास है। For example, Bilal is good at English. So Bilal or English, again, English is the name of a language and Bilal is the name of a boy. ये दोनों के नाम आ गए, तो ये नाउन है। The capital of England is London. England जो है वो अब कंट्री है, लंदन उसका कैपिटल सिटी है। तो अगेन सिटी का नेम और कंट्री का नेम दोनों नाउन है आपके। ऐसा अ ब्यूटीफुल हॉर्स, इसमें जो हॉर्स है इज द नेम ऑफ एनिमल, फिर किसी चीज़ का नाम आ गया तो फिर हमारे पास ये नाउन होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट नाउन। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ, विच इज प्रोनाउन। A pronoun is used in a place of a noun or a noun phrase to avoid repetition. Basically, noun is that particular part of speech in which we use those words which are used instead of nouns. For example, अगर मैं आपको direct, if I give you my own example, for example, my name is Faisal. Sir Faisal is teaching in the class. Sir Faisal is taking tests. Sir Faisal is marking the text. Sir Faisal is calling the students. तो ये तमाम चीज़ें बार बार रेपिटिशन आ रही है। इस रेपिटिशन से बचने के लिए हम इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं। प्रोनाउंस हमारे पास कौन कौन से हैं? हमारे पास डिफरेंट प्रोनाउंस जो इंग्लिश ग्रामर में यूज़ होते हैं, इसमें फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल सा प्रोनाउंस बता दूं। हम वो वर्ड्स जो कि हम नाउन की जगह पर लगाकर यूज़ करते हैं वो प्रोनाउंस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, दीज ऑल आर प्रोनाउंस। ठीक है, ओके, लेट मी गिव यू फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द प्रोनाउन। Asad is at work this week. He's gone on holiday. Okay, जो Asad है, he's not at work. Sorry, I'm just repeating my sentence. Asad is not at work this week. He's gone on holiday. कि Asad जो है वो इस वीक में जो है वो नहीं अटेंड कर रहा, जॉब नहीं अटेंड कर रहा, क्योंकि वो अपनी हॉलीडे जो है वो एंजॉय करता है। तो डेफिनेटली फर्स्ट में मैंने असद लगाया, दोबारा नेक्स्ट जो सेंटेंस था, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, उसमें मैंने दोबारा असद नहीं लगाया, बल्कि उसकी रेपिटिशन से अवॉइड करने के लिए मैंने ही लगाया। तो जो मेल्स हैं, बॉयज़ हैं, उनके लिए ही लगता है, जो गर्ल्स हैं उनके लिए हम शी लगाते हैं, जो हमारे पास नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए हम इट का यूज़ करते हैं, वी यूज़ इट। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ अ चेयर, इट इज़ अ डॉग। सो जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए हम इट का यूज़ करते हैं, जो हमारे पास लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए हम आई, वी, यू, दे का इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो जब हम नेक्स्ट लेक्चर जो है प्रोनाउन का डिस्कस करेंगे तो उसमें इसमें डिफरेंट कैटेगरीज भी इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।
बट राइट नाउ आपके लिए एक दफ़ा दोबारा से रिव्यू कर दूं कि प्रोनाउंस आर दोज वर्ड्स which we use instead of noun in the sentence to avoid the repetition of that particular noun. तो इसकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास. Don't tell her the truth. अब इस सेंटेंस में do not tell her the truth. Her is the pronoun in this sentence. Okay, you cannot blame him for everything. No, who is him? We don't know because him is the pronoun in this sentence और him is हमने him लगाया है. ये ऑब्जेक्टिव केस में him आ रहा है, he का him आ रहा है ताकि हम इसको अवॉइड कर सकें बार बार उस नेम को. तो इस सेंटेंस में जो him है हमारे पास वो प्रोनाउन. The next sentence, the woman who called yesterday wants to buy the house. हम अब उस दोबारा वुमेन का नेम नहीं ले रहे बल्कि उसकी जगह पर हम एक नाउन भी यूज़ कर रहे हैं, who, which actually लिंक कर रहा है इसको, और yesterday wants to buy the house. So in all these examples we have discussed the pronouns, and pronouns are those words which are used in the instead of the noun. I hope कि आपको noun और pronoun ये दो parts of speech में अभी तक थोड़ी सी इसका कोई आइडिया हो गया होगा. और नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच है वो हमारे पास एडजेक्टिव आती है. Adjectives basically the part of speech which actually describes or modifies or gives more information about noun or a pronoun. Actually it modifies the information of a noun. ये noun के बारे में हमें थोड़ा सा मज़ीद elaborate करती है, explain करती है एडजेक्टिव जो है, और हमें डिस्क्राइब करती है कि नाउन की डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके बारे में मज़ीद आगाही देती है, मज़ीद बताती है कि एडजेक्टिव बेसिकली क्या चीज़ है. Hey there. एडजेक्टिव हम उन वर्ड्स को कहते हैं जो कि नाउन्स को क्वालिफाई करते हैं, नाउन की क्वालिटीज़ को बताते हैं, उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं. तो इसकी एग्जांपल्स हैं बिग, हैप्पी, ग्रेन, यंग, फन, crazy, dear, red, black, orange, tall, small, big, strong. All these are the examples of the adjectives which actually tells us about the noun or a pronoun. For example, I have a few examples for you. This is a black car. अब आप इसके ऊपर point करते हो कि I have seen a black car. तो simply in this sentence the black car actually car तो है, लेकिन कार की डिस्क्रिप्शन क्या है, वो गाड़ी किस कलर की है, क्या उसका मॉडल है, क्या उसकी कंपनी है. These are all the description of a noun. If there is a description of a noun, then we definitely categorize it into the adjective. The small squirrel ran up the tree. अब यहाँ पे squirrel है लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है, that it is small. During the thunderstorm we saw some heavy rain. मतलब आप थंडरस्टॉर्म के दौरान आपने देखा कि बहुत शदीद बारिश हुई थी, हैवी रेन. रेन को डिस्क्राइब किया गया कि वो रेन नॉर्मल नहीं थी, एक्चुअली वो बहुत तेज़ बारिश थी. ओके, माय ब्रदर हैज़ अ शॉर्ट हेयर. ओके, सिंपल, इसमें जो हेयर हैं लेकिन उसकी हेयर की क्वालिटी क्या है, हेयर इज अ नाउन, और इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है, एक्सप्रेस किया जा रहा है. तो हमारे पास इसमें जो सेंटेंस में हैज़ अ शॉर्ट हेयर, तो शॉर्ट इज द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस. Okay, the weather is hot and sunny today because आजकल वैसे भी बड़ा hot temperature जा रहा है. तो in this sentence the weather is hot and sunny today. So in this sentence actually hot and sunny both are describing the weather. The weather is a noun. तो इसलिए हम इसको adjective जो है वो consider करेंगे. The leaves on that tree are green and large. So both are the qualities of the trees. Leaf, तो हम इसको एडजेक्टिव कहेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, जो भी वर्ड क्वालिफाई करे, डिस्क्राइब करे, एलैबोरेट करे नाउन को या प्रोनाउन को, हम उसे एडजेक्टिव कहते हैं. फाइन, आई होप कि आपको इसका थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा. नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है वर्ब. A verb shows an action or state of being. A verb shows that what someone or something is doing.
Actually, a verb is basically the part of the speech in which we discuss, or in which we, you can say that we express the action. If there is an action in the sentence, if there is an action of in the word, then we call the particular word is a verb. अगर किसी word में कोई action show किया जा रहा हो, Hey there. कोई भी action show किया जा रहा हो, वो हमारे And पास also press verb this bell कहलाता icon. है. ठीक है? The word which express the actions in a sentence is known as the verb. और डेफिनेटली ये एक मेन पार्ट होता है सेंटेंस का. इसके जो बगैर विदाउट इट सेंटेंस जो बिल्कुल इनकम्प्लीट होता है, अपनी सेंस जो है वो कन्वे नहीं कर सकते. तो वर्ब बेसिकली इट शोज एन एक्शन. ये आपको एक्शन जो है वो शो करता है. इसमें किसी काम का करना जो है वो एक्चुअली जाहिर होता है, तो वो आपके पास वर्ब कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, स्पीक, टॉक, वॉक, रन. All these are the example of the verb. I have a few examples. I have used words in the sentence as well. For example, I like Woodward English. So basically liking is showing my interest. Fine. I study their charts and play their games. So basically there are two words which shows the action in the sentence, and we call it verbs. The study is the verb and the play is the verb. The other example is, do not try to run before you can walk. Okay, try and walk, both are the verbs. Leave me alone. In this sentence, leave is a verb. Okay, Sarah feels cold. The word feels is actually showing the action, is the verb. I'm very happy. The am is known as a helping verb, but it's a part. I'm very happy. The am is known as a helping verb, but it's a powerful verb, you can say. The cattle are grazing in the field. The actual verb is grazing, जो है मतलब हमारे पास है. Police caught the thief. The word caught is showing the action, and action is the verb in the sentence. So dear students, जो word हमारे पास कोई ना कोई action show कर रहा होता है, उनको हम verb कहते हैं. और ये किसी भी सेंटेंस में मैंडेटरी है, और इसके बगैर सेंटेंस जो है वो मुकम्मल नहीं होता. इसमें कोई ना कोई एक्शन, जिस सेंटेंस में कोई वर्ड अगर आपको एक्शन शो करता हुआ नजर आए, तो आप टू मैक्सिमम एक्सटेंड दैट पर्टिकुलर वर्ड इज द वर्ब इन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस. सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्ब. आई होप कि आपको वर्ब की अंडरस्टैंडिंग जो है वो आप डेवलप कर चुके होंगे. नेक्स्ट वर्ब के बाद हमारे पास द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है. दिस इज द एडवर्ब. An adverb describes or modifies a verb or an adjective or an other adverb. It tells how, where, when, how often, to what extent. Adverbs basically describes or qualifies the quality of a verb in that particular sentences. तो ये आपको मैक्सिमम एक्सप्लेन करता है, इलेबोरेट करता है कि बेसिकली आपने इसको एक्सप्रेस करना है कि वर्ब क्या चीज़ है. तो ये हमें वर्ब के अकॉर्डिंगली जो है ये हमें इलेबोरेट करता है. तो एग्जांपल्स इसके हैं बेटा. स्लोली, क्वाइटली, वेरी, ऑलवेज, नेवर, टू, वेल, टुमारो, हियर. All these type of the words is actually expressing the idea of the verb, so we call it adverb. तो basically अगर हम इसको word adverb को ही देखें, तो verb के पीछे add लगा हुआ है. adverb, it means it is adding meaning to the verb. अगर कोई word अपना meaning add कर रहा है verb के अंदर, then it is known as an adverb. Fine. Example, for example, slowly, quietly, hurriedly, all that, angrily, all these type of mostly जो adverbs हैं, mostly, not all, mostly words के end में ly आता है. angrily, happily, all that type of words is known as the adverbs. तो examples जो हैं इसके हम discuss करते हैं. For example, I am usually busy. So in this sentence, the word usually is actually expressing and adding meaning to the verb is known as verb.
I ate my lunch quickly. Quickly is also showing भाई मैंने lunch कैसे किया, जल्दी में किया. तो actually it is directly adding meaning to the verb and it is known as the adverb. So this is an extremely attractive photograph. Extremely is the adverb. Oh, this important one. I have a very large pet dog. The word very is the adverb. Okay, when I am running late for the work, I eat my breakfast rapidly. Then the rapidly is actually showing the quality of an action, and it is known as rapidly. The boy is crying loudly. ठीक है, तो crying को express कर रहा है, बच्चा रो तो रहा था, लेकिन वो कैसे रो रहा था? Loudly. तो loudly is the word is actually expressing the verb, and the word which describes the word which describes the verbs is known as adverb. So these are all about the adverbs. इसको एक दफ़ा दोबारा मैं explain कर दूँ कि बेटा adverbs are those words which added meaning to the verb, जो verb के जो है अंदर अपने meaning को add करते हैं, वो हमारे पास adverb कहलाते हैं. और basically हम describe करते हैं कि किस तरीके से आपने इसको express करना होता है. तो ऐसे वर्ड्स जिनके एंड में मोस्टली जो एडवर्ब्स हैं मोस्टली हैं बेटा, आई एम अगेन सेइंग मोस्टली, लेकिन ऑल नहीं है, नॉट ऑल. मैक्सिमम एडवर्ब्स के एंड पे एल वाई आता है, और ये जो बेसिकली हमारे पास एडवर्ब होते हैं उनको हमें पता कैसे चलता है, क्योंकि ये मीनिंग ऐड करते हैं वर्ब्स के, और जो वर्ड्स जो है वर्ब के अंदर अपने मीनिंग को ऐड करता है, इट इज़ नोन एज एडवर्ब. So this is all about adverb. Our next part of speech is prepositions. A preposition shows the relationship of a noun or a pronoun to another word. They can indicate time, place, or relationship. So basically, dear students, जो preposition है, actually, these are the very cutest part of the speech, क्योंकि ये actually relationship show करता है in the sentence. For example, आप एक बता, और ये the second function of the preposition is to also express the place or the position of the words that are using in the sentence. तो ये place, time और relationship को भी show करने में helpful होता है. It is the preposition. Okay, for example, if I give you the example, I saw a cat on the wall. मैंने एक बिल्ली देखी जो कि दीवार के ऊपर बैठी हुई थी. तो इसमें sitting on the wall, the little word on is the preposition because it is telling me the position of that particular cat. So these are all the example. Let me tell you the examples of the prepositions: at, on, in, from, with, near, between, about, under. This is all about the prepositions. Prepositions actually let us know the place, the time, and the relationship among the words in the sentences. Or a preposition shows the relationship between a noun or a pronouns to another word. Relationship show करता है. Examples आपको बता दी गई हैं. Now I'm going to use that particular preposition in the sentences. For example, I'm going to the salon after my dinner. The word after is the preposition. I'm waiting for you. Waiting for. You will find the theater in the town. In. I saw the news in the newspaper. Again, the in is a preposition. I'm sitting on the sofa. On. The cat or the puppy is hiding beneath the chair. Then you can see the beneath. All type of words, such type of words which actually expressing the position of the noun or pronoun and showing the relationship between noun and pronoun with other words is known as the prepositions. So I hope dear students कि आपको preposition की understanding जो है definitely develop कर चुकी होगी. Next हमारे पास है conjunctions. A conjunctions joins two words, ideas, phrases, clause together in a sentence and shows how they are connected. So basically conjunctions जिस तरह के इसके नाम से जाहिर है कि junction means to attach two things. दो चीज़ों को bind कर देना, दो चीज़ों को attach कर देना is known as a junction. तो conjunctions basically
दो थॉट्स को, दो आइडियाज़ को, दो वर्ड्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं, दिस इज पर्टिकुलरली नोन एज द कंजंक्शंस. So conjunctions joins two words, ideas, phrases or the clauses together in a sentence and shows how they are connected. So this is the definition of the conjunction. और इसकी एग्जांपल्स हैं, आप जब एग्जांपल्स बताऊंगा तो डेफिनेटली आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लोगे कि and, or, but, because, yet, unless, since, if, these are all the example of conjunctions. Now I'm going to use these examples in sentences. For example, I was hot and exhausted. In this sentence, and but I still finished the marathon. ठीक है, मैं वो कि मैं बहुत थक गया था और बहुत मैं परस्पायर हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद मैंने अपनी मैराथन रेस जो है वो कंप्लीट की. तो हॉट एंड एग्जॉस्टेड में जो वर्ड एंड है इज कंजंक्शन, और जो बट आई स्टिल फिनिश द मैराथन इसमें जो बर्ड है इट इज अगेन एक्चुअली कनेक्टिंग टू मेन आइडियाज. तो बर्ड इज द कंजंक्शन इन दिस सेंटेंस. माई फ्रेंड एंड आई आर गोइंग ऑन अ पार्टी, आर गोइंग ऑन अ डेट फॉर एग्जाम्पल. तो इसमें हम कह सकते हैं कि दो वर्ड एंड जो है वो हमारे पास अगेन कंजंक्शन. आई विल गो टू द शॉप but not before I have had something to eat. So in this sentence again the word but is the conjunction. I was tired yet I still went to the gym. The word yet is the conjunction in this sentence. Hamid was angry because no one invited him in the party. तो इसमें जो because है, because is attaching and joining two main ideas. The because is the conjunction in this sentence. So dear students, the conjunction is basically those words, and conjunctions are which actually joins two words, two thoughts, two ideas and two phrases and clauses in the sentences. तो जो इन दोनों को join करते हैं words वो हमारे पास conjunctions होते हैं. For example, and, or, nor, और इसमें but, because, so, yet, unless, since, if, these are all the examples of conjunctions. In the last but not least, interjection. Interjection is a word or phrase that expresses a strong feeling or emotions. It is a short exclamation. So basically the word which is expressing your thoughts, your emotions, your feelings is known as interjection. That particular word is known as interjection. कि ऐसे वर्ड्स जो कि आपके जज्बात को, आपके एहसासात को, इमोशंस को इजहार करते हैं और वो पर्टिकुलर होते हैं, तो वो आपके पास इंटरजेक्शन कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल, अब इसमें हम नॉर्मली जो कैजुअली हम एग्जांपल्स देते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि अलास वी हैव लॉस्ट द मैच, हुर्रा वी हैव वन द मैच. तो इन द फर्स्ट स्टेटमेंट अलास में जो है आई एम मॉर्निंग में एक डिप्रेशन शो कर रहा हूँ, डेस्परेशन शो कर रहा हूँ कि हम मैच हार गए. और इन द नेक्स्ट सेंटेंस जब मैं हुर्रा का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ एक्चुअली, तो आई एम एक्सप्लेनिंग माई इमोशन कि आई एम वेरी मच हैप्पी ऑन सीइंग दैट वी हैव वन द मैच. तो इसमें जो वर्ड हुर्रा है एक्चुअली इट डिस्क्राइब्स द इमोशंस. We call it as introjection in that particular sentence. So basically इसमें एक और चीज़ आपको बेटा important बताता है जो कि there is special a sign of interjection, a mark of interjection. तो वो भी हमें इसके लिए इट इज़ मैंडेटरी कि जहाँ पर भी हम खास पर्टिकुलर वर्ड्स जो हैं वो लगाएं तो we have to use that sign of exclamation. और वो उसमें हम डायरेक्टली inverted I होता है, small I, वो हमारे पास मोस्टली यूज़ करते हैं हम उसको एज अ सिग्नेचर, एज अ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और वो इंटरजेक्शन में यूज़ होता है. सो आई हैव अ फ्यू एग्जांपल्स फॉर यू. वाओ, डिड यू सी हाउ बिग दैट बर्ड वाज, इसमें एक्सक्लेमेशन शो की जा रही है. तो वाओ के बाद हमारे पास इन्वर्टेड आई. ओह, आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट आई सॉ योर फादर लास्ट वीक. तो इसमें ओह के बाद हम डायरेक्ट इसको पोर्ट्रे कर देंगे. Then yeah, she is going with us tonight. इसमें फिर exclamation show किया जा रहा है, तो definitely we have to put inverted I or a sign of exclamation after yeah.
So interjection, once again I'm going to tell you about the interjection. The interjections are those words which are actually expressing our thoughts, emotions and ideas, or whenever we use the words interjections, we mostly place a sign of exclamation along with these words. हम उनके साथ एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है वो बेटा वो यूज़ करते हैं उसके लिए. तो दिस इज़ ऑल अबाउट इंटरजेक्शन, जो हमारे ऐसे वर्ड जो हमारे एहसास जज्बात को शो करे वो हमारे पास इंटरजेक्शन कहलाता है. So far, dear students, in today's lecture we have discussed all the parts of the speech. There are basically 8 parts of the speech: noun, pronoun, verb, adverb, adjective, conjunction, interjection. और इनमें हमने उसकी एग्जांपल्स, डेफिनेशंस और उसके यूज़ इन द सेंटेंसेस जो है हमने डिस्कस किए. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पार्ट्स ऑफ द स्पीच, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ द नाउन एंड द टाइप्स ऑफ द प्रोनाउन. So thank you very much for your cooperation. Take care, stay blessed. Allah Hafiz.